Hello and a very warm welcome to all my dear students in the same 2 in the class of maths. This is the first time we are meeting after the value vacations are over and the work has started. Today in the maths we'll be starting a new lesson, which is your lesson number 7. Can you see the patterns? So dear children, first of all, what you have to do is you have to write here same 2, and then you have to write date 11 12 20 20. That also date you have to write, and then you will start your work. Now this is a very easy lesson in which only you have to draw the patterns, and in numbers also certain, after skipping certain numbers you have to write those numbers also. So first we'll start with the patterns that are shown here, and when the rotation of those patterns takes place, how does it look? Now here you can see the border over here. Now here you can see this part is on the top, the reverse of this is here, मतलब complete जो है half rotation करके ये pattern बना है. Again half rotation, this pattern is formed. Again half rotation, this pattern is looking like this. So this is the half of rotation. This pattern is this only, main pattern is this, but after half rotation, that means turning half upside down, this pattern looks like this. So one by one rotation up and one rotation down, one up, one down, one up, one down. That means every time half rotation is done by the pattern and this border has been made. Now what is written here? Let us see. Isha, your skirt is beautiful. My mother made the pattern. I have seen the same block making a different pattern on the kurta. How was it different? Now see, this pattern is this only, but by just giving a rotation of half, the pattern changes or the entire border changes. So this is the way you can change the pattern. Here also you can see the pattern is the same, but the rotation changes. Now instead of half rotation, it is the 1/4 rotation that is given, and then 1/4, then 1/4, then 1/4 and 1/4. So after 1 2 3 and 4, बट 4 रोटेशंस कंप्लीट होंगे, इसका जो 5th रोटेशन होगा वो दैट विल बी सेम एज द फर्स्ट वन. पहले ये रोटेशन ऐसा हुआ, फिर यहाँ से ये ऐसा होगा, फिर हियर, फिर देन हियर. दैट मीन्स 1 2 3 टोटल 1 2 3 and 4 rotations. The 5th one will be like the first one. वैसे ही the same pattern will be continued. Half rotation, 1/4 rotation, then 1/4 and then complete rotation will take place. So this way you can change the patterns by just changing the rotations, number of rotations of that pattern. So this way you can make the patterns. Now this was page number 99. Now we move on to page number 100. Here also turns and patterns. Now how does the pattern look when they are turned? Look at this block. We make 3 different rules to turn it clockwise and see the pattern. Now the rotations are of 2 types. One is the clockwise. This way if it goes, then this is a clockwise, and if the rotation goes like this, then it is anti-clockwise. I'll explain you in this. See, if this circle is there, I am drawing one circle over here. Now this is the circle. If the circle rotates this way, मतलब कि अगर ऐसे चलता है, if the rotation goes like this, then this is called as the clockwise rotation. What do we call this? This is called as clockwise. क्लॉकवाइज का मतलब कैसा होता है कि जो घड़ी चलती है ना, जैसे यहाँ से 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो घड़ी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही चलती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज. घड़ी कभी ऐसे नहीं चलती कि 12 11 10 9. दिस वे इट डजंट गो. द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑलवेज मूव 12 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is called as clockwise. Now again I'll draw the circle. If the rotation is like this, of the pattern goes like this, that means it starts from here, rotates from here, और ऐसे करके वापस जो है उसी पॉइंट पे हो जाता है जहाँ पे शुरू हुआ. दिस इज कॉल्ड एज द anti-clockwise rotation. What do we call it? Anti-clockwise rotation. So there are 2 types of rotation. One is the clockwise rotation and other is the एंटी क्लॉकवाइज. मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में जो घूमना होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम बोलते हैं. नाउ हियर द पैटर्न्स आर गिवन इन विच दे से दैट द पैटर्न्स आर रिपीटेड क्लॉकवाइज. सो रिपीट अ पैटर्न 1/4 टर्न. 1/4 टर्न. अब हमारे पास ये पैटर्न है. हम आई जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस पैटर्न ओनली.
जैसे हमने यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ किया लाइक अ डायमंड शेप. नाउ यू कैन सी व्हाट विल बी द 1/4 रोटेशन. यहाँ से जो यहाँ पहला रोटेशन आएगा, दिस विल बी योर 1/4 रोटेशन. फ्रॉम हियर इट विल मूव, देन दिस इज योर सेकेंड 1/4 रोटेशन. फ्रॉम हियर इट विल मूव, दिस इज योर थर्ड 1/4 रोटेशन. एंड व्हेन इट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, दिस विल बी योर फोर्थ 1/4 रोटेशन. 1 1, then this will be 2, this will be 3, and this will be 4. So there will be total 4 1/4 rotation to complete one complete rotation. एक complete rotation को पूरा करने के लिए how many rotations will be needed? If there are 1/4 rotations, हम इसको ऐसे divide करके बता सकते हैं. ये पहला rotation यहाँ से यहाँ हुआ, this is your first rotation. यहाँ से यहाँ this will be your second one. From this to this point, this is your third rotation, and this to this point is your fourth rotation. So for one complete rotations, there will be 4 1/4 rotations. Now we can go again, get back to the pattern. जब ये रोटेशन हमने यहाँ से यहाँ किया तो पैटर्न का शेप कैसा हो जाएगा. देखिए पहले हमारा पैटर्न है, इट इज़ समवॉट लाइक दिस पैटर्न. हमको खाली 1/4 रोटेशन करना है. दैट मीन्स दिस साइड विल कम एट दिस पॉइंट. तो अभी जो है ये आड़ा हो जाएगा. ये हो जाएगा. दिस विल बी द फर्स्ट 1/4 रोटेशन. 1/4 रोटेशन के बाद ऐसा हो जाएगा. अब जो है उसके बाद हमको ये सेकेंड 1/4 रोटेशन करना है. वी वांट टू डू दिस रोटेशन. तो अब ये वाला पॉइंट है वो इधर आ जाएगा. जो इसमें फ्लावर का पैटर्न है, पहले जो फ्लावर का फेस ऊपर था यहाँ पर, अभी ये साइड में हो गया फ्लावर का फेस. अब जो आएगा, जो फ्लावर का फेस यहाँ से यहाँ आएगा, तो फ्लावर का फेस कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा. द फ्लावर विल कम दिस साइड. उसके बाद जो फोर्थ रोटेशन यहाँ से यहाँ होगा, तो जो फ्लावर होगा वो इस साइड आ जाएगा. तो ये फोर्थ रोटेशन हुआ तो फ्लावर का फेस यहाँ आ गया. और जो फिफ्थ रोटेशन आएगा, दैट मीन्स गोइंग बैक टू द ओरिजिनल प्लेस. देन अगेन द फ्लावर विल कम टू दिस साइड. नाउ द रोटेशन विल बी लाइक दिस. So these are the 4 1/4 rotations, and you can see the change in the pattern. You can see 1/4 rotation था यहाँ से यहाँ, तो फ्लावर ऐसे हो गया. उसके बाद फ्लावर नीचे आ गया. देन फ्लावर हैज़ कम टू द लेफ्ट साइड एंड अगेन गोइंग बैक टू द ओरिजिनल. उसके बाद वापस यहाँ से रोटेशन किया. तो सेम वे द रोटेशन इज रिपीटेड. दिस इज योर 1/4 रोटेशन. व्हाट टाइप ऑफ रोटेशन इज दिस? 1/4 रोटेशन. और 1/4 रोटेशन के लिए 4 rotations will be needed. How many rotations are needed? 4 rotations will be needed to complete one rotations. ये 1/4 के लिए हुआ, for 1/4. Now if we take the half rotation, repeat with the 3 half rotation. Second one is your rule 2. half rotation में क्या होगा? अब देखिए हमारे पास ये पूरा एक ऐसे शेप है ये. अब हाफ का मतलब क्या है कि सीधा यहाँ से यहाँ आएगा. मतलब कि ये जो फ्लावर का पैटर्न जो इधर बना हुआ था, वो फ्लावर का पैटर्न कैसे हो जाएगा? अब ये जो फ्लावर है वो इधर आ जाएगा. जो ऐसे है, ये फ्लावर इधर आ जाएगा. उसके बाद वापस हाफ रोटेशन करना है. दैट मीन्स इट हैज़ टू गो बैक टू लाइक दिस. तो अगेन जो फ्लावर अपसाइड डाउन हो गया था, दैट फ्लावर विल अगेन कम बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट द top. So और उसके बाद again 1/4 rotation, then this position will come. So this is the half rotation. तो यहाँ पे फ्लावर का पोजीशन ये हो जाएगा. So this way again going back to this, then this position will come again. So this is your half rotation. Then is your 3/4 rotation. Repeat the rotation 3/4 turn. मतलब कि 3 पार्ट का रोटेशन हमको एक बार में कवर करना है. पहले हमने 1/4 पार्ट का किया, फिर हाफ पार्ट का, मतलब पहले एक पार्ट का किया और फिर 2 पार्ट का एक साथ किया. अब 3 पार्ट का रोटेशन जो है हम एक साथ करेंगे. जैसे अगर सर्कल है तो ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट. नाउ डियर चिल्ड्रन, सी this was a 1/4 rotation means 1 part of the circle. Then half rotation means 2 parts of the circle. And 3/4 rotation means 1, 2 and 3 parts of the circle. At a time you have to rotate completely 3 parts of a circle. Children, practice time is in the textbook. What should come next? Now you can see here the circle with the half part is yellow and half part is red with 2 dots over here. Then this is the original one, the first position of the circle. After 1/4 rotation clockwise it looks like this. Then again 1/4 rotation this wise, and then again will be the 1/4 rotation. I have drawn here. This part that I have colored will be the red, and this will be the yellow part with 1 dot here and 1 dot here. Then after again 1/4 rotation, this side will be there, this will be red, and this will
be the yellow part with the red dot here and the yellow with the black dot on the red here and black dot on the yellow side here. So this way you have to color red and yellow also. I have done one with a pen to show that this is the red part. Now here the second one is your N. This is also your 1/4 rotation N, then this way, then again this way, then this way, and this. जैसे पैटर्न दी हुई है सेम पैटर्न you have to follow in 1/4 rotation of the M. Now next is your page number 101. Say children, while doing the pattern you have to observe the pattern very carefully, the patterns that are given here. Now you can see this is a triangle that is given here with 1 2 3 and 4 dots, and in this point it is only one dot is given. Now when you are doing the rotation, you know that this is your which type of rotation. See, this side is on the top. Now this side has come over this side. That means ये कौन सा rotation है, ये खाली यहाँ से घूम के ये part यहाँ आ गया, मतलब एक ही part का rotation है. This is your 1/4 rotation. So after 1/4 rotation the positions, this part has come here and the dot has moved to this place. यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा, ये part इधर आ जाएगा. अब again जब 1/4 rotation होगा तो क्या होगा, ये side जो है वो ये side पे आ जाएगी और ये dot इधर आ जाएगा. फिर जो 1/4 rotation होगा will be totally like the first one, मतलब 1 2 3 हो गया, fourth one will be again like the first one हो जाएगा. फिर जो second होगा that will be like the fifth होगा that will be like the second one. So this is your 1/4 rotation clockwise. ये जो rotations है, these are all clockwise rotations. Now here the pattern starts from here. Now here you can see it has gone to this side, और यहाँ से खाली 1/4 ही rotation है, क्योंकि अगर हम इसको 4 parts में अगर हम ऐसे divide करके देखें तो ये जो point है, ये जो design है इसके अंदर, that design is just moved to this place only. ये second में you can see that in the first, ये इसको आप ऐसे डिवाइड करिए और देखिए तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर ये मूव किया है. दैट मीन्स ये 1/4 रोटेशन है, बट दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज. ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ से ऐसे गोल गया, ऐसे जाके फिर वापस आएगा. उसके बाद थर्ड रोटेशन में इट हैज़ गॉन ऑन द टॉप, देन फोर्थ रोटेशन इट विल कम टू दिस साइड. एवरी टाइम you have to keep on turning this P at 45 degrees every time till you get this P. So this way you have to complete the pattern which is on page number 102. I think it is written. It is written so small that is not, I am not able to read it also. So you complete this in your textbook and do the same in your notebook also one time. This practice time you have to write it in your notebook also one time. Page number 101. Now the same questions, some patterns are given below on the left side of the red line. For each pattern write the rule, choose the that comes next for the right side and of the line and tick it. Now you can see here there are three rotations you can see. You have to find which is the fourth rotation. So there are three rules that we did, rule 1 2 and 3. One was the 1/4 rotation, second was the half rotation, and third was the 3/4 rotation. In the 3/4 rotation you can see this 1 2 and 3 rotation that you have seen here. So this is the 3/4 rotation. So this flower that was here will come this side, and next 3/4 rotation is there. That means अब यहाँ पे आ गया तो ये 1 2 और 3, that means this flower will face this side. Now from here 3/4 rotation, 1 2 and 3, the flower will move to this side. So this way you have to count the 3/4 rotation. So there are three rules. One is for the 1/4 rotation, second is for the half rotation, and third is for the 3/4 rotation. Now here you can see the pattern. This is your first rotation. Now this is your 1/4, this is your also 1/4. So the rule is, this is your first rule, repeat it with 1/4 turn. So next will come the second picture that is given here. This is the correct one. This is your rule for 1/4 rotation. 1/4 rotation, and that also clockwise. 1/4 rotation clockwise. Now same way second also
This is also, you can see, you just start from this point also. This was here, this has come to this place, and this has shifted here, and this has shifted here. That means एक proxy हम यहाँ से खाली इतना ही shift हुए, ऐसा नहीं है यहाँ से जो है ये यहाँ पर था तो यहाँ से shift हुए, यहाँ से अगर हाफ होता तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता, अगर हाफ टर्न होता तो जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में चला जाता, ये ऊपर होता तो ये नीचे आ जाता, नीचे होता तो ये ऊपर आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट एक बॉक्स मूव हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो योर 1/4 रोटेशन. सो करेक्ट आंसर इज दिस वन. अब यहाँ से ये सेकेंड पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से ये थर्ड रोटेशन आया, तो फोर्थ रोटेशन कौन सा होगा कि ये कलर जो है, जो डार्क कलर है, इट शुड कम टू दिस साइड. सो द सेकेंड वन इज करेक्ट. अगेन इट इज योर 1/4 रोटेशन clockwise. Now there are 3 rotations again. Now you have to mark the things like this. जैसे ये जो points इसके अंदर दिखाएं, ये जो points है इनका movement आप देखिए, पहले ऐसे था, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से ये ऐसे था, तो अभी ये आधा हो गया, उसके बाद ये ऐसे हो गया, तो थर्ड विल कम दिस वन, अप डाउन. अप है तो फिर डाउन हो गया, फिर अप है तो कैसा आ गया, ये डाउन आ गया. सो दिस वे यू हैव टू राइट दिस. देन दिस ऑल्सो यू कैन सी, ये जो अब ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से कितना 1 2, ये जो पूरा होगा ये 3/4 रोटेशन आएगा. दिस विल बी योर रूल 3. ये हाफ रोटेशन आएगा और ये रूल 3 आएगा. दिस विल बी योर रूल 3 एंड दिस विल बी योर रूल 2. अब आप देख सकते हैं पैटर्न में कि यहाँ पर था, अगर एक रोटेशन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, और थर्ड रोटेशन विल बी हियर. सो दिस इज टर्न लाइक दिस. उसके बाद अगेन 1 2 एंड 3 इट हैज़ गॉन अप. नाउ फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3 इट हैज़ कम टू दिस साइड. यू विल जस्ट सी द कॉन्सेंट्रेट ऑन द फेस ऑफ दिस पार्ट कि ये यहाँ नीचे है और अभी ये पार्ट यहाँ पर आ गया है, तो कितना रोटेशन, हाउ मेनी रोटेशंस इट हैज डन, 1 2 एंड 3. सो दिस इज योर 3/4 रोटेशन रूल. 3/4 रोटेशन, ये हाफ रोटेशन वाला है. So the correct answer will be the first one. In this case, the correct answer is first one. You can also see यहाँ से एक rotation, फिर 2 rotation, and third one, this face has to come this side down. So the first option is correct in this case also the first option is correct. Now if we move on to page number 103. Now what is given here? Look at the pattern. Now what we have to see in this pattern, let us see. Mark the pictures which is breaking the rule, also corrected. Now we have to make the, from these pictures we have to find which is the wrong picture or where the rotation is different. From here you can see this is your half rotation is taking place. In this half rotation is there, क्योंकि ये ऊपर था तो सीधा नीचे आ गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. तो यहाँ पर जो ये है, दिस पिक्चर इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो ऊपर है तो दिस शुड कम डाउन. इसमें ये वाला जो पिक्चर है, दिस पिक्चर शुड कम हियर, दिस पार्ट शुड कम हियर. यहाँ पर जो है ये नीचे आना चाहिए. सो दिस पार्ट इज रॉन्ग, क्योंकि उसके बाद फिर वापस ऊपर है. कंटिन्यूसली 3 dots on the top is there, so the middle one has to come, dot has to go down. So this one is wrong. Half rotation वाला ये होगा. Now here you can see this is your 1/4 rotation. This is 1/4 rotation is there. So this way side is there, then 1/4 rotation down, then again side and up, then this side, right side, then this has to go down. अभी right side के बाद जो है कौन सा आएगा, ये वाला आना चाहिए यहाँ पर. So this is wrong. So यहाँ पर this one you have to draw the umbrella which is upside down like this. This umbrella is correct. So this one is wrong here. उसके बाद ये ठीक दिया हुआ है. Now birds you can see this 1 2 3. 3 birds that are flying with the going up. Now the birds 1 2 and 3 should go down, but this is going up. So ये जो bird है वो wrong है. इसमें इस टाइप का feathers जो है वो यहाँ पे आना चाहिए. Bird going in this direction. So this one is wrong in this case. Now you can see this is a triangle with a circle and a triangle inside. अब ये triangle है, उसके अंदर circle और एक और जो है diamond shape है. फिर diamond है, फिर ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है. ये ट्राइंगल के अंदर क्या आना चाहिए, सर्कल, और सर्कल के अंदर जो है ये डायमंड शेप आना चाहिए. सो दिस वन इज रॉन्ग इन दिस केस. Now magic squares are there. This we are going to do in the next turn. Now this drawing of patterns will continue in the workbook now.